हेलो एवरीवन। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन में आज हम आपके साथ हैं एक नए टॉपिक के साथ जो कि है स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट्स। सो टुडे इन दिस वीडियो वी विल बी लर्निंग द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट्स एंड द क्वेश्चंस रिलेटेड टू इट। जो क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे वो क्वेश्चंस हैं जो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अलग अलग ईयर्स में पूछे गए हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक दैट इज योर स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। So what is a square root and cube root? First of all, we'll be understanding that अगर हम कोई भी नंबर लें, सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट 5, अगर हमने 5 लिया और 5 को हम 5 से ही मल्टीप्लाई करें, सेम ही नंबर से मल्टीप्लाई करें, सो वी गेट स्क्वायर ऑफ 5 दैट इज योर 25। मतलब किसी नंबर को यदि उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, सो वी आर गेटिंग द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर, दैट इज इन केस ऑफ 5, इफ वी आर मल्टीप्लाइंग 5 by 5, वी आर गेटिंग स्क्वायर ऑफ 5 दैट इज योर 25। सो 25 5 का स्क्वायर है, तो यानी हम मानेंगे कि जो 25 है उसका स्क्वायर रूट क्या होगा? 5 होगा। जिस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे हमें स्क्वायर मिलता है, तो इस नंबर का स्क्वायर रूट वही नंबर होगा। सिमिलरली इफ आई एम सेइंग दैट आई एम मल्टीप्लाइंग 6 by 6 and I am getting a square of 6, that is your 36. So we will be saying that a square root of 36 will be your 6. जो 36 का स्क्वायर रूट होगा वो 6 होगा। Similarly, if I'll be taking number 3 and multiplying 3 by 3, we are getting your 9. So square of 3 is 9 और 9 का स्क्वायर रूट जो होगा वो होगा 3। स्क्वायर रूट का साइन होता है, दिस इज अ रेडिकल साइन, जिसको हम बोलते हैं स्क्वायर रूट का साइन बोलते हैं। यानी कि हम लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 25 का स्क्वायर रूट विल बी योर 5। सिमिलरली वी कैन से स्क्वायर रूट ऑफ 36 will be your 6. Square root of 9 will be your 3. So this is the sign for finding square root. So there are few methods for solving the square root or for finding the square root. One of the method is your prime factorization method. Another is your long division method. So prime factorization method, suppose I am saying I am taking the number 36. 36 ये जो numbers हैं जो हमें एक ही number को उसी number से multiply करने पे मिलते हैं, like 25 हुआ, 36 हुआ, 9 हुआ, इनको हम perfect squares बोलते हैं। अब यदि मैं 36 लिया, इसका मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, सो प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर if I'll be dividing it by 2, so 2 1 is 2, 2 8 is 16, again divided by 2, 2 9 is 18, then 3 3s are 9, then 3 1 is 3। यानी कि 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 3। अब जो हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन आया उसमें हम 2 2 के पेयर्स बनाएंगे, जो प्राइम फैक्टर्स हैं उनके 2 2 के पेयर्स बनाएंगे। यहाँ पे हमने 2 2s ले लिए, 2 3s ले लिए, इनमें से हम एक एक नंबर बाहर निकालेंगे। इट इज योर 2 1 2 ले लिया हमने, 1 3 ले लिया, यानी कि 36 का स्क्वायर रूट होगा आपका 6। दिस इज हाउ दिस बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड वी कैन फाइंड द स्क्वायर रूट। देयर इज अनदर मेथड दैट इज योर लॉन्ग डिवीजन मेथड। उसका ऑलरेडी हमने एक छोटा सा वीडियो बनाया हुआ है कि किस तरीके से लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम बड़े जो नंबर्स होते हैं उनका प्राइम फैक्टराइजेशन उन करके मतलब उनका स्क्वायर रूट हम फाइंड कर सकते हैं। Now let's see the type of questions which are generally asked in the square roots. अब यदि ये तो नंबर्स जो थे वो तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, यानी कि इनका हम इजीली स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं, लेकिन कुछ नंबर ऐसे होंगे जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, यानी कि उनका हम परफेक्टली स्क्वायर रूट फाइंड नहीं कर सकते। तो हम उस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करें या किससे डिवाइड करें सो दैट इट विल बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। सपोज आई एम टेकिंग द नंबर 120। 120 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि ये 120 जो है परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। सो व्हाट वी विल बी डूइंग इज वी विल बी फाइंडिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 120। सो वी विल डिवाइड इट बाय 2, 2 60 टाइम्स इट इज 120, 2 30, 2 15 टाइम्स 30, 3 5 is 15 and 5 1 is 5। सो 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 5। अब हमें क्या करना है कि जो प्राइम फैक्टर्स हैं उनके पेयर्स बनाने हैं। सो ये 2 का तो एक पेयर बन गया, सो मतलब ये तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा इसका, तो ये तो ऑलरेडी एक पेयर बन गया, लेकिन 2 का पेयर नहीं है, इस 3 का पेयर नहीं है, इस 5 का पेयर नहीं है। तो 120 कब एक परफेक्ट स्क्वायर होगा? जब सबके पेयर होंगे, यानी कि हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? इसका पेयर के लिए हमें एक और 2 चाहिए, इसके पेयर के लिए हमें एक और 3 चाहिए, इसके पेयर के लिए हमें एक और
5 चाहिए। यानी कि यदि हम इस 120 को 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 कर दें तो ये सब के सब जो प्राइम फैक्टर्स हैं इन सब के पेयर्स बन जाएंगे और ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। So by what number it is to be multiplied so that it becomes a perfect square? It will be 2 3s are 6 and 6 5 is 30. यदि इसको हम 30 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। Similarly, if the question says by what number it should be divided so that it becomes a perfect square, तो divide के केस में भी अब देखिए इसका इस 2 का तो ऑलरेडी पेयर वी आर हैविंग, ये 2 हमारे पास अनपेयर्ड है, ये 3 अनपेयर्ड है, ये 5 अनपेयर्ड है। यदि हम इसको इन तीनों से डिवाइड कर दें तो ये वाला पोर्शन हट जाएगा। वी विल बी हैविंग ओनली 2 into 2 ओनली, दैट इज ऑलरेडी अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज इट इज हैविंग अ पेयर। तो यानी डिवाइड करना है तो भी हमें सेम ही नंबर से डिवाइड करना है। 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 दैट इज 30। यानी यदि 120 को हम 30 से मल्टीप्लाई करें तो भी ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा और यदि 30 से डिवाइड करें तो भी ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। सो this is how we can find it out that by what number it is to be multiplied or divided so that it becomes a perfect square. Now the another type of questions are कि by what number what is the least number which should be added or which should be subtracted so that this become a given number becomes a perfect square. So उस केस के लिए हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड से उसको सॉल्व करना पड़ता है। लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमें उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना होता है और जो रिमाइंडर बचता है यदि हम उस रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर दें सो वी विल बी गेटिंग द नंबर दैट विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर। सो वी विल बी टेकिंग सम ऑफ द क्वेश्चंस रिलेटेड टू इट so that it will be clear that how to solve that type of questions. Or already we are having a video on that. If you will be watching it, it will be clear that how to solve these type of questions. So this is about your square root. Now what is cube root? So if we are going to take a number and if we are going to multiply the number 3 times, 3 multiplied by 3 multiplied by 3, 3 3s are 9, 9 3s are 27. So 3 का क्यूब तो हुआ हमारे पास 27 और यदि हम देखेंगे तो 27 का क्यूब रूट विल बी और 3। सिमिलरली अगर नंबर लिया हमने 2 को मल्टीप्लाई किया 3 टाइम्स, so we will be getting 2 2s are 4, 4 2s are 8. So 8 will be the cube of 2 and cube root of 8 will be your 2. 8 का क्यूब रूट 2 होगा और 2 का क्यूब 8 होगा। यानी कि हम इसको लिखेंगे कैसे? द साइन फॉर द क्यूब रूट इज दिस इज द साइन फॉर योर क्यूब रूट। सो क्यूब रूट ऑफ 8 इज योर 2। सिमिलरली दिस कुड बी रिटन एज क्यूब रूट ऑफ 27 is your 3. Similarly, if we will be taking 4 multiplied by 4 multiplied by 4, so 4 4 is 16, 16 4 is 64. So 4 का क्यूब तो 64 है और 64 का क्यूब रूट इज योर 4. क्यूब रूट का मीनिंग क्या होता है? पावर इज योर 1/3. इट मीन्स योर पावर इज 1/3. So 64 का क्यूब रूट मीन्स 64 की पावर 1/3. And if we will be solving it, 64 could be written as 4 raised to the power 3 because 4 into 4 into 4 is your 64. So 64 could be written as 4 raised to the power 3 and whole raised to the power 1/3. So we know the laws of exponents. A raised to the power m whole raised to the power n is a raised to the power m into n. So powers multiply होंगी. So it is 4, 3 multiplied by 1/3. That will be 4 raised to the power 1 or we will be saying 4. This is how we can find the cube root. Now what is the meaning of your square root? Square root means power is your 1/2. As it is in the case of cube root, power is 1/3. Similarly, in the case of square root, power is 1/2. 36 square root means 36 raised to the power 1/2. This is the meaning of square root and this is the meaning of cube root. Now, if the question comes that by what number the given number should be multiplied or should be divided so that it becomes a perfect cube, or find the cube root of given number. Suppose I am saying I am taking 125. We have to find the cube root of 125. So what we will be doing is, again we will be doing the prime factorization only. 125, so it will be divisible by 5. So 5 2s are 10, 5 5 is 25, 5 5 is 25, 5 1. So 125 could be written as 5 multiplied by 5 multiplied by 5. तो जो भी गिवन नंबर है उसका हम पहले प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे और जब प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर लेंगे उसके बाद हर प्राइम फैक्टर का हम
3 का ग्रुप बनाएंगे. लाइक इन द केस ऑफ स्क्वायर रूट वी वर मेकिंग ऑफ ग्रुप ऑफ 2 2. लाइक इन द सिमिलरली इन द केस ऑफ क्यूब रूट वी विल बी मेकिंग पेयर ऑफ योर 3 3. वी विल बी मेकिंग ग्रुप ऑफ 3. सो यहाँ पे 5 का एक पेयर बन गया, एक ग्रुप बन गया 3 का. सो we will take 1 5 from it and we will say that the cube root of 125 is your 5. मतलब हम 3 3 का ग्रुप्स बनाएंगे और एक ग्रुप में से एक नंबर ले लेंगे. इस ग्रुप में यहाँ पे तो ऑलरेडी 5 का ही ग्रुप था और कोई ग्रुप था ही नहीं. सपोज योर नंबर इज से 1000. अगर हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे सो इट विल बी 2 into 2 into 2 into 5 into 5 into 5. अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 का एक ग्रुप बना 3 का, सिमिलरली 5 का भी एक ग्रुप बन गया. सो इस 2 के ग्रुप में से एक 2 लिया, इस 5 के ग्रुप में से एक 5 लिया एंड वी विल से दैट द क्यूब रूट ऑफ 1000 इज योर 10. This is how we can find the cube root of a given number. Now if it is not a perfect cube, these are the perfect cubes. 125 perfect cube है 5 का, आपका 1000 perfect cube है 10 का, आपका 8 perfect cube है 2 का, 27 cube है 3 का. Similarly your 64 is even cube of 4. But if we are having the number which is not a perfect cube, say I am taking the number say 120 only I am taking, कि अब 120 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए so that it becomes a perfect cube. So अभी हमने देखा कि 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है. 120 could be written as 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 5. ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है. अब हम क्या करेंगे, 3 3 का ग्रुप्स बनाएंगे. सो 2 का तो हमारे पास ऑलरेडी 3 का एक ग्रुप है, लेकिन 3 का नहीं है, 5 का भी ग्रुप नहीं है. तो यदि हमको इसको परफेक्ट क्यूब बनाना है तो 3 के भी 3 3 के ग्रुप होने चाहिए और 5 के भी 3 3 के ग्रुप होने चाहिए. यानी हमारे पास ऑलरेडी 1 3 है. सो हाउ मेनी मोर 3s आर रिक्वायर्ड? 2 more 3s आर रिक्वायर्ड. सो 2 more 3s आर रिक्वायर्ड. सिमिलरली हमारे पास 1 5 है, लेकिन परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हमें 2 5 और चाहिए, यानी कि वी विल बी मल्टीप्लाइंग इट बाय 2 5s. So 3 3s are 9 and 5 5 is 25. So 25 into your 9 will be your 225. यानी कि यदि 120 को 225 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा. अब डिवाइड किससे करें कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा? तो देखिए ऑलरेडी 2 का हमारे पास ग्रुप है 3 का, हमारे पास एक्स्ट्रा क्या है, दिस 3 इज एक्स्ट्रा, दिस 5 इज एक्स्ट्रा. यानी कि यदि हम इसको 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 15 से डिवाइड कर दी 120 को तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा. सो मल्टीप्लाई करने के लिए कितना कम है वो उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे. हमारे पास एक 3 है, पूरा ग्रुप बनाने के लिए हमें 2 3 और चाहिए. हमारे पास 1 5 है, हमें पूरा ग्रुप बनाने के लिए 2 5 और चाहिए. तो हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट इट विल बिकम अ परफेक्ट क्यूब. और यदि डिवाइड करना है तो जो हमारे पास एक्स्ट्रा है उससे हम डिवाइड कर देंगे सो दैट इट विल बिकम अ परफेक्ट क्यूब. सो हमारे पास 1 3 एक्स्ट्रा है, 1 5 एक्स्ट्रा है. तो यदि हम 15 से 120 को डिवाइड करेंगे सो व्हाटसोएवर द नंबर वी विल बी गेटिंग will be a perfect cube. So this is the basic concepts of your square root and cube root. How to find the square root, how to find the cube root. This is how. Now we will be solving questions which are asked in various competitive exams. One more thing is, if it is like there are two numbers, one is your a multiplied by b, we have to find the square root of a multiplied by b. So what we can do is we can find the square root of a separately multiplied by square root of b separately, and then we will multiply both of them. Suppose we have to find the square root of 4 multiplied by 9. So it will be square root of 4 multiplied by square root of 9. Square root of 4 is your 2 and the square root of 9 is your 3. So it will be 2 3s are 6 will be the square root of this given number. Similarly, if it is your square root of a divided by b, so separately we can find the square root of a divided by separately we can find the square root of b. It is applicable for your cube root also. If we have to find cube root of a multiplied by b, so separately we can find the cube root of a also, separately we can find the cube root of b also, and then we can multiply it. So all these are the basic concepts related to square root and your cube root. Now let's understand some of the questions related to square roots and cube roots. So the first question is, what is the largest 4-digit number which is a perfect square? Largest 4-digit number ऐसा कौन सा है जो कि एक perfect square है?
So we know the largest 4-digit number is your 9999. ये आपका लार्जेस्ट 4-digit नंबर है। हम क्या करेंगे, पहले इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड से फाइंड करेंगे इसका स्क्वायर रूट। मैंने बताया था ऑलरेडी, हमने इसी वीडियो में देखा था कि अगर हमें ये फाइंड करना है कि व्हाट इज द नंबर टू बी एडेड और टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द गिवन नंबर सो दैट द नंबर बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर। सो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, या आपके क्वेश्चन से व्हाट इज द लार्जेस्ट 4-digit नंबर या द स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर which is a perfect square. So in these type of questions we will be finding the square root by your long division method. So पहले हम क्या करेंगे, long division method के लिए राइट हैंड साइड से 2 2 का पेयर बनाएंगे। तो वन ऑफ द पेयर विल बी योर 99, अनदर पेयर विल बी योर 99. So from here, from the right hand side, we will start making pair. So एक पेयर बना हमारा 99 का, दूसरा पेयर बना 99 का। यदि यहाँ पे हमारे पास इंस्टेड ऑफ 4-digit नंबर इट इज अ 3-digit नंबर, तो जो हमारा दूसरा पेयर बनता वो केवल एक ही डिजिट होती है उसके अंदर 2 डिजिट नहीं होती। तो अब हमारे पास ऑलरेडी 99 है यहाँ पे, तो हम एक ऐसा नंबर सेलेक्ट करेंगे जिसको उसी नंबर से यदि हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 99 आए या 99 से स्मॉलर नंबर आए। तो हम देखें तो 8 8 is 64, 9 9 is 81. So 9 9 is your 81. So 81 आ गया, 9 को हमने 9 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 81 आ गया जो कि 99 से स्मॉलर है। अब हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया, so 9 minus 1 will be your 8 and 9 minus 8 will be your 1. अब हम क्या करेंगे, जो सेकंड पेयर है वो 99 का, उसको हम लिख लेंगे यहाँ पे। जो 9 हमने लिया था यहाँ पे नंबर, इसको हम इसी नंबर से वापस ऐड करेंगे। 9 plus 9 will become your 18. अब यहाँ पे हमें एक नंबर लेना है, उस नंबर को सपोज हमने यहाँ पे 2 लिया तो 182 हो जाएगा नंबर। तो 182 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो जो हमारे पास नंबर आए वो इस नंबर से छोटा होना चाहिए या इस नंबर के इक्विवेलेंट होना चाहिए। तो अब हम यहाँ पे क्या नंबर लेंगे, सपोज हमने लिया यहाँ पे नंबर सपोज लिया 9, तो यानी कि 189 को हमें मल्टीप्लाई करना होगा 9 से। सो 9 9 is your 81, 9 9 is 81, so 8 will be the carry over, 8 9 is 72 and 8 was the carry over, 72 80, 8 will be the carry over, 9 1 9, so it will be 17, 1701 it will be. So we will be writing 9 over here because 1701 is smaller than your 1899, so we will be taking this number. So हमने 189 लिया, 9 यहाँ पे लिया और same number we will be writing it over here also. This is our question. 189 को 9 से मल्टीप्लाई किया, so we will be getting 1701. Now we will be subtracting it. 9 minus 1 किया, we will be getting 8. 9 minus 0 किया, we will be getting 9. 8 minus 7, it is your 1. So 198 is your remainder. अब यदि हम 9999 जो कि हमारा डिविडेंड है उसमें से 198 को सब्ट्रैक्ट कर दें, बिकॉज दिस इज द एक्स्ट्रा पार्ट, रिमाइंडर इज योर एक्स्ट्रा थिंग। तो यदि इस नंबर में से हम 198 को सब्ट्रैक्ट करें तो जो भी हमारे पास नंबर आएगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, बिकॉज एक्स्ट्रा जो नंबर है यदि हम उसको सब्ट्रैक्ट कर दें सो व्हाटसोएवर द रिमेनिंग नंबर विल बी, दैट विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर। सो 9999 में से यदि हम 198 को सब्ट्रैक्ट करें सो वी विल बी गेटिंग 9 minus 8 will be your 1, 9 minus 9 will be your 0, 9 minus 1 will be your 8 and it is your 9. So 9801 will be a perfect square and it will be the square of your 99. 99 का स्क्वायर होगा and it will be your 9801. So this is how we can find it out. The next question is cube root of 216 multiplied by cube root of 50 plus 75. So first of all we will be writing cube root of 216 as it is. I am writing it. First of all I am solving this part. 50 plus 75 will be 5 will come over here, 7, it is 125. Now 216 का cube root we have to find. So what we will be doing is we will be finding the prime factorization of it. 2 1 is 2, 2 8 is 16, 2 5 is 10, 2 4 is 8, 2 2 4, 2 7s are 14, 3 9 is 27, 3 3s are 9 and 3 1. So it is वन पेयर, ये आपका 3 का एक ग्रुप बन गया 2 और ये एक और ग्रुप ये बन गया 3 का। हमने 2 का मतलब ग्रुप ले लिया, जो कितने नंबर्स का, हमें 3 3 नंबर्स के ग्रुप बनाने हैं। तो ये 3 नंबर्स का एक ग्रुप हो गया, ये 3 नंबर्स का एक ग्रुप हो गया,
इसमें से हम एक नंबर ले लेंगे, इस ग्रुप में से हम एक नंबर ले लेंगे, एंड 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज योर 6, यानी कि 216 का क्यूब रूट विल बी योर 6. तो क्यूब रूट ऑफ 216 विल बी योर 6. सिमिलरली यदि 125 का हम क्यूब रूट फाइंड करें, so 525 times 125, 5 is 25, 1 is 5. So we are having 3 5s, so 1 5 will come out. So cube root of 125 will be your 5. So cube root of 125 is 5, and 5 multiplied by 6 is 30. So value of x will be your 30. Now the next question is square root of 478 plus 160 minus 314 multiplied by 8. There is no square root sign with your 8. Simply square root sign हमारे पास यही है. तो पहले हम इसका अंदर का पार्ट जो है उसको solve करेंगे. What the value we will be getting? First of all, we are adding these two numbers. 8 plus 0 will be your 8. 7 and 6. 13, 3 carry over 1. 4, 5 and 1, 6. Minus 314 multiplied by 8. So this will be 8 minus 4 will be your 4. Then it is your 3. 3 minus 1 is your 2. And 6 minus 3 will be your 3. 324 multiplied by your 8. This will be the number. Now we have to find the square root of 324. So what we will be doing is 324. Either by the prime factorization we can find, or by your long division even we can find. So let's see how we can find by the long division. First of all, from the right hand side we will start making the pair. एक पे 24 का हुआ, दूसरा हुआ हमारा जिसमें केवल एक ही डिजिट है, that is your 3. Now we will be taking 1. 1 multiplied by 1 is your 1. Because अगर हम यहाँ पे 2 लेंगे तो 2 multiplied by 2 will become 4, which is greater than 3. So we will be taking 1 over here. So 1 multiplied by 1 is your 1. Now we will be subtracting it. 3 minus 1 will be 2. Now ये जो second pair है that we will copy it over here. 1 में हम 1 ही add करेंगे, so it will become 2. अब यहाँ पे हमें एक नंबर लेना है, जो भी नंबर लेंगे उसी नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे. 20, suppose we are taking यहाँ पर 4, so 24 multiplied by 4 we will be doing. Like that we have to do, and the number should be either equivalent to 224 or it should be less than 224. So what the number we can take? 6 6 is 8 8 is 64. If I'll be taking 8 here, so 28 multiplied by 8. 8 8 is 64, carry over 6, 8 2s are 16, 16 and 4 is your 224. That means if I'll be taking 8 here, so 8 I am to write here also. 28 multiplied by 8 is your 224. So we will be subtracting, remainder will be 0. That means 324 perfect square है, और इसका square root है 18 will be the square root of 324. So we will be writing over here 18 multiplied by 8. 8 8 is 64. 6 carry over, 8 1 is 8. 144 will be the value of this expression. So this is how we can solve it. Now let's understand some more questions related to square root and cube roots. So the fourth question is, what is the least number that can be multiplied to 69,120 to make it a perfect cube? Means 69,120 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए जिससे कि जो नंबर है वो एक परफेक्ट क्यूब बन जाए. So first what we will be doing is, first of all we will be finding the prime factorization of 69,120. So 69,120 हमने लिया, इसका prime factorization हम find करेंगे. So first of all, because it is a even number, will be divisible by 2. 2 3s are 6. 2 4 is 8. 2 5 is 10. 2 6 is 12. So it is the number. Now again it is divisible by 2. 2 1 is 2. 2 7 is 14. Then 2 2s are 4. 2 8 is 16. 2 8 is 16. Then 2 6 is 12. 2 4 is 8. 2 4 is 8. 2 3s are 6. 2. Then again 2. 2 2s are 4. 2 1 is 2. 2 6 is 12. 2 1 is 2. Then 2 8 is 16. It is 0. Then again divisible by 2. 5 is 10. 2 4 is 8. 2 2s are 4. 2 7 is 14. Then again by 2. 1 is 2. 2 3s are 6. 2 5 is 10. Now 5 6 8 9. So it is divisible by 3. 3 4 is 12. 3 5 is 15. 3 1 is 3. 3 5 is 15. Then 3 3 5 is 15. 5 1.
So this is the prime factorization of 69,120. Now we have to find the number by which it is to be multiplied so that it become a perfect cube. Cube means we have to make pair of 3 3. So this is one of the pair of 3. This is again one pair of 3. This is again one pair of 3. This is again one pair of 3. Now 5 is your unpaired. हमारे पास केवल 1 ही 5 है और हमारे पास 3 3 के पेयर्स होने चाहिए हर प्राइम नंबर के. सो 5 का हमारे पास क्योंकि एक ही नंबर है यानी कि हमें इसका परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए 2 more 5s are required. So what we will be doing is we will be multiplying the given number by 5 multiplied by 5, that is your 25. Because बाकी जो सारे नंबर हैं 2 हैं और 3 हैं वो सब ऑलरेडी 3 3 के पेयर्स में हैं. केवल 5 ही एक ऐसा नंबर है जो कि अनपेयर्ड है. हमारे पास ऑलरेडी ओनली 1 5 है यानी कि अगर हमारे पास 2 5 और हो जाएं तो हमारे पास 5 का भी 3 का ग्रुप बन जाएगा. सो वी वांट 2 more 5s are required. So we will be multiplying the given number by 2 5s, that is your 25, so that it will become a perfect cube. The next question is the least number that should be added to largest 3-digit number to make it a perfect square. अब हमारा क्वेश्चन है कि जो लार्जेस्ट 3-digit नंबर है उसमें हम क्या ऐड करें, कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर हम उसमें ऐड करें जिससे कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए. सो जस्ट नाउ वी डिस्कस कि जो इस तरीके के क्वेश्चंस होंगे वी विल बी फाइंडिंग द स्क्वायर रूट बाय योर लॉन्ग डिवीजन मेथड. सो लार्जेस्ट 3-digit नंबर वी नो इट इज योर 999 इज द लार्जेस्ट 3-digit नंबर. सो अब हम इसका लॉन्ग डिवीजन से स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे. फ्रॉम द राइट हैंड साइड वी विल बी मेकिंग द पेयर. वन ऑफ द पेयर विल बी ऑफ 99, अनदर विल बी योर सिंगल डिजिट योर 9. So 9, if we are going to take 3 multiplied by 3 is your 9. Subtract it, it will be 0. Then we will take this 99 over here. 3 में हम 3 को add करेंगे. 3 plus 3 will become 6. Now we have to take one number over here. अगर हम यहाँ पे 2 लें तो 62 को यदि हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे so it will be greater than your 99. So we will be taking 1 over here. 61 multiplied by 1. 61 multiplied by 1 will be your 61. Subtract it. 9 minus 1 is your 8. 9 minus 6 is your 3. 38 is your remainder. अगर क्वेश्चन होता है कि क्या नंबर हम सब्ट्रैक्ट करें, what is the least number which should be subtracted in 999 so that it becomes a perfect square, in that case 38 is the answer. 38 क्योंकि एक्स्ट्रा है, रिमाइंडर है. यदि 999 में से 38 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो जो भी नंबर आएगा वो 31 का परफेक्ट स्क्वायर होगा. अब हमें करना क्या है कि कुछ नंबर ऐड करना है 999 में जिससे कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए. अब ये जो 999 है वो 31 के स्क्वायर से कुछ ज्यादा है, लेकिन 32 जो 31 का नेक्स्ट स्क्वायर बनेगा वो क्या बनेगा, 32 का स्क्वायर बनेगा. यानी कि 999 31 के स्क्वायर से तो ज्यादा है लेकिन 32 के स्क्वायर से कम है. यानी यदि हमने इसमें कुछ ऐड किया नंबर तो वो क्या होगा, 32 का स्क्वायर बनेगा. सो व्हाट वी विल बी डूइंग इज वी विल बी फाइंडिंग द स्क्वायर ऑफ 32. 2 2s are 4, 3 2s are 6, then 3 2s are 6, 3 3s are 9, 4 6 12, it is your 1024. यानी कि यदि हम इसमें कुछ ऐड करेंगे जिससे कि वो परफेक्ट स्क्वायर बने तो वो क्या नंबर बनेगा, 1024 बनेगा. यानी व्हाट इज द नंबर विच इज टू बी एडेड विल बी योर 1024 minus of your 999. That is 14 minus 9 will be 5. It will become 11, 11, 9, again 2. So 25 is the number. यानी यदि 999 में 25 ऐड कर दिया जाए तो वो 32 का परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा. That will be your 1024. So this is how we can solve these type of questions. Now the next question is what is the square root of 5 plus 2 divided by root of 5 minus 2. तो यदि इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं तो पहले हम डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करते हैं. रेशनलाइज करना मीन्स जो डिनोमिनेटर में रेडिकल साइन है वो रिमूव होना चाहिए. उसके लिए व्हाट वी विल बी डूइंग इज आई एम सॉल्विंग इट ओवर हियर ओनली. जो भी डिनोमिनेटर में सपोज यहाँ माइनस का साइन है सो वी विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इट बाय प्लस साइन. इट इज योर 2 हियर. So we will multiply and divide by root 5 plus 2. Denominator में root 5 minus 2 है तो हम इसको multiply और divide करेंगे root 5 plus 2 से. Now if we will be solving it further, numerator में क्या हुआ, root 5 plus 2 multiplied by root 5 plus 2. That is your root 5 plus 2 का whole square हो गया.
and in the denominator it is your a minus b, a plus b. जो आइडेंटिटी है हमने पढ़ी है a plus b multiplied by a minus b. यदि हम इसको ओपन करें, सॉल्व करें, तो इट इज योर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. a क्या है यहाँ पे? रूट ऑफ 5 और b क्या है? 2. तो a माइनस बी, a प्लस बी, a है रूट 5 और b है 2. अगर इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे द प्रोडक्ट विल बी और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. a स्क्वायर मीन्स रूट ऑफ 5 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर. So it will be in the numerator, it is your root 5 plus 2 का whole square divided by root of 5 का square means 5 only and 2 का square will be 4. So 5 minus 4 is denominator is 1, so we can ignore the denominator. So value will be numerator will be your root 5 plus 2 का whole square. अब हमें फाइंड क्या करना है? व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ. ये जो वैल्यू निकाली है हमने वो तो इसी चीज की वैल्यू निकालनी है. अब हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना मीन्स वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस. अब स्क्वायर रूट का मीनिंग जस्ट नाउ वी सेड कि इट्स वैल्यू पावर इज योर 1/2. दैट मीन्स रूट 5 प्लस 2 का स्क्वायर की पावर 1/2. दैट मीन्स 2 and 2 are going to cancel. Your answer will be root 5 plus 2. So square root of this will be your root 5 plus 2. Whensoever we are having these type of numbers means radical sign in the denominator, first of all we rationalize it and then we will be solving it further. Now let's understand some more questions. Let x is equivalent to 6th root of 27 minus square root of 6 3 upon 4 and y is equivalent to root of 45 plus root of 605 plus root of 245 divided by root of 80 plus root of 125. Find x square plus y square. So what we have to do is, first of all we have to find the value of x, then we have to find the value of y, and then finally we have to find the value of x square plus y square. So first of all let's see, we will be solving the value of your x. So what the value of x will be? It is your 6th root of 27. That means it could be written as 27 raised to the power 1 upon 6 minus square root of 6 4 is 24. 24 plus 3 will be 27 by 4. 27 by 4. Now 27 could be written as 3 multiplied by 3 multiplied by 3. That means cube of 3 will be your 27. So this could be written as 3 cube whole raised to the power 1 upon 6 minus over here 27 could be written as 3 multiplied by 3 multiplied by 3 divided by 4 could be written as 2 multiplied by 2. Now 3 2 times it is going to cancel, so it will be 3 raised to the power 1 upon 2 only, because it was 3 raised to the power 3 whole raised to the power 1 upon 6. That means 3 raised to the power 3 multiplied by 1 upon 6, it will be 3 raised to the power 1 upon 2, or we can write it as root of 3 also. So its value will be root of 3 minus, here 3 could be taken out of these 3 3s, from these 2 3s, मतलब इन दोनों 3 में से 1 3 will come out and square root of 4 is even 2, so 1 2 will come out of the square root sign. So 3 by 2 तो square root के बाहर आ जाएगा. This 3 and this 2 will come out of the square root sign and remaining will be your root of 3. क्योंकि 3 एक 3 unpaired है, टोटल 3 3s है, तो हम पेयर बनाएंगे 3 का, तो 1 pair will come out. So from the 1 pair 1 3 we have taken out and 1 3 is inside the square root sign. Similarly from 2 2s 1 2 will come out of the square root sign. Now LCM we will be taking, 2 will be the LCM, so it will be 2 root 3 minus 3 root 3 by 2, or we can say 2 root 3 minus 3 root 3 will be minus of root 3 by 2. This is the value of x. Now we have to find the value of y. Whenever these type of questions are there, we have to find the prime factorization. हम क्या करेंगे? इनका prime factorization करेंगे. 45 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 into 3 into 5. 3 3s are 9 and 5 9 is 45. So 45 could be written as 3 multiplied by 3 multiplied by 5. So there are 2 3s are there. So 1 3 will come out of your square root sign. So 45 could be written as 3 root of 5 plus 605. So what we will be doing is we will be finding the prime factorization of 605. So it is divisible by 5. 5 1 is 5. 5 2s are 10. 5 1 is 5. 11 is 121 is divisible by 11. It is a square of 11. So 11 11 is 121. So
11 का पेयर बन गया, सो 11 विल कम आउट ऑफ द स्क्वायर रूट साइन, एंड क्योंकि 5 का पेयर नहीं है, only single 5 is there, that means we will be writing is as 11 will come out of the square root sign and 5 will be inside the square root sign. So 605 को हम लिखेंगे 11 root 5. अब 245 का यदि हम स्क्वायर रूट प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करें, so it is divisible by 5, 5 4 is 20, 5 9 is 45, 7 7 is 49, again 7 1. So again हमारे पास 7 का पेयर है, तो 7 will come out of the square root sign, and 5 क्योंकि unpaired है तो 5 will remain inside the square root sign. So it will be 7 root of 5 divided by 80 could be written as, again find the prime factorization of 80, 2 40 times, 2 20 times, then 2 10 times, then again 2 5 times, 5 1 time. So ये one pair of 2, one pair of 2, that means 2 multiplied by 2, 4 will come out of the square root sign and 5 will remain inside the square root sign. So it will be 4 root of 5. 125, we know 5 into 5 into 5 is your 125. That means 125 could be written as your 5 root of 5. Now if we'll be solving it further, 3 root 5 plus 11 root 5. 11 plus 3 will be your 14. 14 plus 7 root 5. 14 root 5 plus 7 root 5 will be your 21 root 5. So it is your 21 root 5. 4 root 5 plus 5 root 5. 5 plus 4 is your 9. So it is your 9 root 5. Root 5 cancelled. 3 3s are 9. 3 7 is 21. So value of y will be 7 upon 3. We have to find the value of x square plus y square. X is your minus 3 root 2. So square of this minus of root 3 by 2 square. This is your x square. Y square will be your 7 upon 3 whole square. This is your y square. So square of minus will become plus, and root 3 square will be 3. Root 3 into root 3 will be your 3 divided by 2 square will be your 4 plus 7 square is 7, 7 is 49, and square of 3 will be your 9. Now we will be taking LCM. 4 9 is your 36. So we'll multiply it by 9. 3 9 is 27 plus 4 9 is 36. 4 4 is 16. 196. It will be 7 6 13, 3 carry over 1. 9 10 12, 2 carry over 1. 1 and 1 2, 223 over 36 will be the answer. So this is how we will be solving it. We'll be finding the value of x first, then value of y first, and then we will be adding the square of both of them. Now the question is, what is the value of this? Again, what we will be doing is, we will be converting it into your, first of all, we will be finding the prime factorization of all the numbers, and we will convert it into radical signs. So let's see how we can write this as, this is your 5 will be written as 5 only. Root 10. Root 10 is your 2 multiplied by 5. So there is no pair of 2 also. There is no pair of 5 also. So let it be your, either we can write it as root of 2 multiplied by 5 also. In the denominator, it is your 5 root 5 minus 20 could be written as your 2 multiplied by 2 multiplied by 5. 20 could be written as 2 multiplied by 2 multiplied by 5. That means there is one pair of 2 is there. So already 1 2 was there. This already was there, and root of 20 could be written as 2 root of 5 minus 32. 32 could be written as your 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2. 2 raised to the power 5 is your 32. So 2 raised to the power 5 it is. That means 2 raised to the power 5 means 2 into 2 into 2 into 2 into 2 is your 32. 2 2s are 4, 2s are 8, 2s are 16, and 2 32. So there is one pair of 2 here, one pair of 2 here. So 1 2 we will take out from here, 1 2 we will take out from here. So 2 2s are 4 root 2 it will be. It could be written as 4 root 2. Now 50. How we will be writing 50 as? 50 could be written as your, first of all, find the prime factorization. 225 times 5 5 5. So there is one pair of 5. So 5 will come out of the square root sign and it will become 5 root of 2. 50 could be written as 5 root of 2 because 2 is unpaired and there is pair of 5. So 5 will come out of the square root sign and it will be your 5 root 2.
Now we will be solving it further. It is 5 plus, this could be written as root of 10 even and root of 2 into 5 even. Now see, it is your 5 root 5 and it is 2 2s are 4 minus 4 root 5. 5 root 5 minus 4 root 5 will be your root of 5. It is minus 4 root 2 plus 5 root 2. 5 root 2 minus 4 root 2 will be plus of root 2. The value of this will be your plus of root 2. Now see, in the numerator, this 5 could be written as root 5 into root 5. 5 could be written as root 5 into root 5, because if we will be multiplying these two, they are pair of 5, so one 5 will come out of the square root sign, so 5 could be written as root of 5 into 5 plus root of 2 into 5 divided by root of 5 plus root of 2. From these two, root of 5 is common in both the two, so root of 5 could be taken common. Remaining will be, this is your root of 5 and root of 5 we have taken common, so remaining over here is your root of 2 divided by root of 5 plus root of 2. This is exactly same, going to cancel, so answer will be root of 5 will be the answer. Its value will be root of 5. Now the next question is, what is the square root of 64% in percentage? Final answer should be in percentage only. So we have to find the square root of 64%, means we have to find this value, square root of 64%. We know in this chapter percentage we have learned that percentage, whenever we will be removing the percentage sign, 100 will come in the denominator. Percentage means per 100. So this could be written as square root of 64 upon 100. Now square root of 64, 8 is 64, so square root of 64 will be 8 and square root of 100 will be your 10, because 100 could be written as 10 multiplied by 10, so square root of 100 will be your 10. That means the value of square root of 64% is your 8 upon 10. But we have to represent this answer in percentage. Whenever we have to convert any fraction in percentage, we have learnt in that chapter that what we will be doing is simply we will multiply it by 100 and apply your percentage sign. So 8 upon 10 multiplied by your 100%. 1010 cancelled, it is your 80% will be the answer. This is how we will be solving it. Now let's understand last few questions. The 10th question is, if x is equivalent to square root of 1 plus a square root of 1 plus a square root of 1, it is coming infinite times, then positive value of x is. We have to find the positive value of x. Now see, infinite times it is coming, so what we can do is we can write x is equivalent to root of 1 plus x also, because infinite times it is coming. If one time we are reducing, then also its value is not going to change, because it is going to come infinite number of times. So we are assuming that this is even the value of x only. So we can write x is equivalent to root of 1 plus this as your x. Now if we will be squaring both the sides, so it will become x square, it is equivalent to this square root sign will remove, because if we will be taking the square of this part, it will be your 1 plus x. Or we can say x square minus of x minus of 1, it is equivalent to 0. This is a quadratic equation. We know how to solve the quadratic equation. We can solve the quadratic equation by the quadratic formula. What is the quadratic formula? It is your minus b plus minus root of b square minus 4ac upon 2a. Any of the quadratic equation, if it is given to us, we can find the roots of the quadratic equation or the solutions of the quadratic equation by this formula. That is your minus b plus minus root of b square minus 4ac upon 2a, where a is the coefficient of x square. What a is, a क्या है, coefficient of x square. x square का coefficient यहाँ पे क्या है, 1, so value of a will be 1. b है coefficient of x, x का coefficient क्या है यहाँ पे -1, so b की value हो गई -1. c है constant number, that is again your -1, so value of c will be -1. अब यदि ये values हम इस formula में रखेंगे, so we will be getting the solution of a or the value of a. Now let's see. If we'll be keeping it, b is your -1, so minus sign was already there, minus of 1 plus minus square root of minus of 1 का square minus 4, value of a is 1, value of c is -1 upon
2 times of a. Minus minus will become plus, plus minus square root of minus 1 का square will be your 1 only, minus minus will become plus, 4 multiplied by 1 will be 4 upon 2. So it will be 1 plus minus 1 plus 4 will be your 5 over 2. Now what is asked? The positive value of x. पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x पूछा है, यानी कि ये निगेटिव वाला हम इग्नोर करेंगे बिकॉज रूट ऑफ 5 की वैल्यू अबव 2 आएगी. दैट मीन्स एज अ होल इट विल बिकम निगेटिव इफ वी विल बी कंसिडरिंग द निगेटिव साइन. लेकिन हमें जो आंसर चाहिए वो केवल पॉजिटिव वैल्यू चाहिए x की. सो दैट विल बी योर 1 प्लस रूट ऑफ 5 बाय 2. दिस विल बी द आंसर. Next question is, if a plus b root 3 whole square, it is equivalent to 52 plus 30 root 3, where a and b are natural numbers, then a plus b will be equivalent to what? Now see, it is your a plus b whole square, where value of a is a and b is b root 3. And we know that a plus b whole square, it is equivalent to a square plus b square plus 2ab. This is the identity. So we will be operating this identity over here. It will be a square plus b square means b root 3 ka whole square. So root 3 square will be 3 and b square will be b square. So it will be 3b square because root 3 into root 3 will be your 3. So it square of b root 3 will be 3b square. It is a square plus b square plus 2ab. 2 multiplied by a multiplied by b root 3, that will be 2 root 3ab. This is the expansion of your a plus b root 3 whole square. Now it is equivalent to your 52 plus 30 root 3. Now if we are going to compare these two, this part and this part, LHS part and RHS part, here root 3 is coming, here root 3 is coming. That means a square plus 3b square तो equal है आपके 52 के इस नंबर के, और आपका 2 root 3 ab equal है 30 root 3 के. If we are going to compare, we can see कि ये वाला जो पार्ट है a square plus 3b square, इसकी वैल्यू तो 52 के इक्वल होगी और 2 root 3 ab जो है वो 30 root 3 के इक्वल होगा. That means root 3 will be cancelled. It is your 2ab is equal to 30 और 2 से डिवाइड किया तो we will be getting ab की वैल्यू जो होगी वो 15 होगी. अब दो नंबर्स हैं, एक है a दूसरा है b और दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 15 आ रहा है. तो उसकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है? आपका हो सकता है कि a की वैल्यू 1 हो, b की वैल्यू 15 हो, या फिर a की वैल्यू आपकी 15 हो, b की वैल्यू 1 हो. इट इज इवन द पॉसिबिलिटी. अदर पॉसिबिलिटीज आर a की वैल्यू 3 हो, b की वैल्यू 5 हो. तो 3 5 इज 15. या फिर वी कैन से कि b की वैल्यू 5 हो, सॉरी b की वैल्यू तो आपकी 3 हो और a की वैल्यू 5 हो. केवल यही पॉसिबिलिटीज है, इनके अलावा तो कोई और पॉसिबिलिटीज है ही नहीं. यानी या तो a 1 होगा या b 15 होगा इन दैट केस, या फिर मतलब ऑल दीज 4 आर द पॉसिबिलिटीज व्हेन योर प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स विल बिकम 15. अब ये जो वैल्यूज हैं यदि हम इसमें रखें, इस वाली इक्वेशन में सेटिस्फाई कराएं, इफ इट इज गोइंग टू सेटिस्फाई व्हाटसोएवर द वैल्यू, जिस भी पेयर के लिए ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, हम वही a और b की वैल्यूज मान लेंगे. तो हमने ये लिया, इक्वेशन है हमारी a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 52 है. अब यदि a की वैल्यू हमने 1 रखी, a की वैल्यू 1 रखी तो दिस पार्ट विल बी 1. b की वैल्यू हमने 15 रखी, तो 15 का स्क्वायर इज योर 225. 225 को हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो और भी बड़ा नंबर आ जाएगा. सो इट इज नॉट गोइंग टू कम इक्विवेलेंट टू 52, सो नॉट पॉसिबल. तो दिस कंडीशन इज तो नॉट पॉसिबल. सेकेंड कंडीशन, a की वैल्यू 15 है, a की वैल्यू 15 रखी तो 15 का स्क्वायर 225 हो गया, उसमें कुछ और नंबर भी ऐड करेंगे तो इट इज नॉट गोइंग टू कम इक्विवेलेंट टू 52, नॉट पॉसिबल. सो दिस इज इवन नॉट पॉसिबल. थर्ड कंडीशन ली अब हमने, a की वैल्यू ली 3, हमने a की वैल्यू 3 ली तो 3 स्क्वायर विल बी और 9 प्लस b की वैल्यू ली 5, 5 का स्क्वायर किया तो 5 5 इज 25. 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बिकम 75. सो अगेन दिस इज नॉट पॉसिबल. So this is again not possible. The fourth condition is a की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू 3. तो a की वैल्यू 5 ली तो 5 5 is your 25 प्लस b की वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर विल बी 3 3s are 9 और 9 3s are 27. दैट इज इक्विवेलेंट टू योर 52. यानी कि ये वाली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है. यानी आंसर फाइनली जो a और b की वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी, a की वैल्यू तो 5 होगी और b की वैल्यू 3 होगी.
अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, a प्लस बी की वैल्यू चाहिए। तो a प्लस बी कितना हो जाएगा, a प्लस बी विल बी योर 5 प्लस 3 दैट इज योर 8 will be the answer. The last question is if root of 4096 is 64, हमें ये वैल्यू गिवन है, so what will be the value of root of 40 plus 0.96 plus root of 0.4096 plus whatsoever is given to us. We have to find its value. Now we can see over here this could be written as square root of, when we are going to remove the decimal, 100 will come in the denominator, स्क्वायर रूट साइन के अंदर ही आएगा। अगेन ये हमने रिमूव किया डेसिमल, तो 4 zeros विल कम अंडर द स्क्वायर रूट साइन। अगर हमने यहाँ पे रिमूव किया तो 1 2 3 4 5 6 zeros विल कम इन द डिनोमिनेटर। यहाँ हमने डेसिमल रिमूव किया, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 zeros will come here. So this will be the solution. Now value of root of 4096 is given to you as 64, यानी इसकी वैल्यू हमने अभी अभी देखा था कि रूट ऑफ यदि x अपॉन y है तो हम इसको रूट ऑफ x अपॉन रूट ऑफ y भी लिख सकते हैं। रूट ऑफ 4096 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 64, एंड रूट ऑफ 100 2 zeros हैं तो स्क्वायर रूट के बाहर हमारे पास 1 0 आ जाएगा, प्लस रूट ऑफ 4096 विल बी 64, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 4 zeros हैं, सो इन द डिनोमिनेटर 2 zeros विल बी देयर। यहाँ पे रूट ऑफ 4096 विल बी 64, इन द डिनोमिनेटर 1 2 3 zeros विल बी देयर। हियर इट इज रूट ऑफ 4096 इज 64 एंड इट विल बी 1 2 3 4, 4 पेयर्स बन रहे हैं जीरोस के, सो 4 zeros will come out instead of 8, 4 zeros will come out of the square root sign. So its value will be 6.4, 64 divided by 10, 64 divided by 100 will be 0.64, it will be 0.064, it will be 0.0064. Now if we will add, this is your up to 4 decimal, it is going up to 4 decimal, so 4 will come here, then 6 and 4, this is done, 6 4 is 10, 0 carry over 1, then 1 6 1 7, 7 and 11, again carry over 1, this is done, 6 and 1 7, 7 and 4, 11 carry over 1, then it is your 6 and 1 7, so its addition will be 7.1104, so its value will be your 7.1104. So this is how these type of questions could be solved. This is all from this chapter, that is your square roots and cube roots. Soon we'll be coming with the more chapters related to your competitive examination. Whatsoever the various types of questions are asked in competitive examination, we'll try to cover all the topics. Thank you.